Right. So let's solve this count sequences to k। तो ये कॉन्टेस्ट का फोर्थ क्वेश्चन था। मैंने जो पिछली वीडियो डाली थी उसमें आई सॉल्व्ड इट विथ फ्रैक्शंस। सो बेसिकली फ्रैक्शंस इज अ फंक्शन, उससे मैंने सॉल्व किया था, राइट? बट दैट वाज नॉट द करेक्ट वे आई गेस। तो बट नाउ आई फाउंड आउट हाउ टू सॉल्व इट। ठीक है, तो अब इसको कायदे से करते हैं थोड़ा हम लोग, and I'll show you how to do it properly, right? So अपने को basically nums array दी है, and at every point we have three choices. We can either divide a value, so value हमें initialize की गई है 1 से, so हम value को either multiply कर सकते हैं जो भी इंडेक्स पे है उससे, या डिवाइड कर सकते हैं जो भी इंडेक्स पे है उससे, या फिर स्किप कर सकते हैं। तो and if any point the value is equal to k, exactly equal to k, then we say that it is a sequence. तो it's a simple, like pretty simple maps है problem। पर इंडेक्स पे अपने को तीन choices है। Basically choices तो दो ही हैं, it's either take, not take, right? We'll either take or we'll skip it। अगर हम लोग टेक कर रहे हैं तो फिर दो choices हैं, we can either multiply or we can either divide। अब the thing is how will we process our value? तो हम लोग को वैल्यू को प्रोसेस करने के लिए we need to process it in like proper fractions, not as integers। So what we will do is we will use like numerator and denominators। और जब हम लोग को मल्टीप्लाई करना होगा तो हम लोग न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे, और जब डिवाइड करना होगा तो हम लोग डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। और चेक फंक्शन में चेक करते टाइम we will just check if the numerator is equal to denominator multiplied by k। तो अगर वो ट्रू है then we will return 1। So let's just start it, ठीक है? uh let's try to solve function जो कि लेगा इंडेक्स एंड वैल। और हम लोग इसको ऐसे करते हैं रिटर्न solve zero index and for val we will I'll give numerator and denominator as 1 comma 1। मैं इसको एज अ डबल भेजता हूँ, ठीक है? और इधर हम लोग चेक करेंगे if index double equal to length of nums, if val 0 double equal to k into val 1, so basically numerator is equal to denominator into k, then we return 1, else I return 0। एंड रिकर्सिव फंक्शन में सिंपली तीन चीजें होंगी, मल्टीप्लाई विल सॉल्व idx प्लस 1 कॉमा, यहाँ पे हो जाएगा val 0 में हम लोग into nums idx कर देंगे, कॉमा val 1 तो ऐसे ही जाएगा, और इसको डबल फॉर्म में ही भेजते हैं अब। डिवाइड में सॉल्व idx प्लस 1 कॉमा val, न्यूमरेटर ऐसे ही रहेगा और डिनोमिनेटर में हम लोग nums idx का मल्टीप्लाई कर देंगे। And then skip part is simple, skip में simply idx plus 1 कर देंगे and val will be simple val, right? And the answer will be, फिर हम लोग रिटर्न कर देंगे multiply plus divide plus skip। So
You can see that it's working. अब इसको just memorize कर लेते हैं. तो मैं डिक्शनरी डीपी यूज कर लेता हूँ यहाँ पे. इजी रहेगा. If idx comma val in dp, then return dp of idx comma val. और यहाँ पे dp idx comma val is equal to this. Okay, return. अब कहाँ गलती हो रही है? आई थिंक इसको अलग से लिखना पड़ेगा. Return dp of idx comma val. Yeah, so it is correct. And come on. Yeah, it's accepted. और ये थोड़ा सा स्लो है, पर इसको फास्ट करने के लिए एक्चुअली हम लोग जीसीडी भी यूज कर सकते हैं. बट छोड़ यार, जीसीडी मैं नहीं दिखाऊंगा. आई थिंक मैंने जीसीडी वाला कोड कर रखा है वैसे. uh, is this gcd code? No, this is not. एक सेकेंड बस. दिस इज द जीसीडी कोड. तो बेसिकली हम लोग पहले ही फ्रैक्शन को वो कर ले रहे हैं ऑप्टिमाइज यहाँ पे, और उसके बाद उसको यहाँ भेज रहे हैं. तो ज़्यादा कुछ है नहीं उसमें भी. ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग.